Hello and welcome to NickTeach. So today we are going to learn about decimal expansion of real numbers. हम real numbers का decimal expansion सीखेंगे. Okay, in previous video we have already learned about what are real numbers. हमने देख चुका है previous video में कि real numbers क्या होते हैं. तो इस वीडियो में हम उनका decimal expansion सीखेंगे and that will help you to solve questions from exercise 1.3, and later in upcoming videos we are going to learn about the basics for exercise 1.2, and at the end of this video I will provide the solutions of the questions that were asked in the previous video. Let's see the decimal expansion with the help of an example. Here this is an example from NCERT. Find the decimal expansion of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. इस एग्जाम्पल में हमें 10 by 3, 7 by 8 और 1 by 7 का डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेट्स सी द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10 by 3. ओके, so when we divide 10 by 3 we get a quotient of 3.333. Here we can notice a point that 3 is repeating. Okay, that's because at every step we are getting remainder equal to 1. Okay, see here we are getting r equal to 1. Here also we are r equal to 1. Here also we get r equal to 1. So here we can see that remainders are repeating at every step. So here we can note a point that if remainders repeat, then we get a repeating block of digits in the quotient. ओके, तो जब भी हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट मिलेगा 3.333. इधर हम नोटिस कर रहे हैं कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है. वो रिपीट किस लिए हो रहा है? क्योंकि हर एक स्टेप के बाद हमको रिमाइंडर एक्चुअली 1 मिल रहा है, जिसकी वजह से आंसर में या क्वेश्चन में 3 जो है वो रिपीट हो रहा है. तो हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जब जब रिमाइंडर रिपीट होगा तब तब क्वेश्चन में भी कुछ डिजिट्स रिपीट होंगे. ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट 10 by 3 इक्वल टू 3.333 और 3.3 बार, वेयर बार इंडिकेट्स द डिजिट दैट रिपीट्स. ओके, तो हम 10 by 3 को 3.33 लिख सकते हैं या 3.3 बार लिख सकते हैं, जहाँ पर बार हमें बताता है कि वो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. Let's see the decimal expansion of 7 by 8. So when 7 is divided by 8 we get 0.875 as a quotient. Okay, we can note a point that here no digit is repeating in the quotient. Okay, that's because at every step remainder is different. Okay, here r equal to 6, that is remainder equal to 6. Here r equal to 4 and then here r equal to 0. So here we are not getting any remainder that repeat itself. Okay, that's why here in the question we are not getting any digit that repeats. Okay, तो जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन मिलता है 0.875. इसमें हमने नोटिस किया कि हमें कोई भी डिजिट रिपीट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है. दैट्स बिकॉज क्योंकि हर एक स्टेप के बाद रिमाइंडर जो है वो डिफरेंट है. पहले स्टेप में रिमाइंडर 6 है, देन 4 है, देन क्या हो गया, 0 हो गया. तो जब रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है तो कोई भी डिजिट क्वेश्चन में रिपीट नहीं होगा. नाउ वी कैन राइट 7 by 8 इक्वल टू 0.875. लेट्स सी द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1 by 7. So 1 is divided by 7. We get a question equal to 0.142857. Then we will see again that this whole block of digits starts to repeat after 7, because after some remainders we again see that the remainders are repeating itself. Okay, like here the first remainder is 3, then 2, then 6, then after 1, here after remainder 1 we get again remainder equal to 3. So after 3 definitely we will get remainder equal to 2, because
if remainder equal to 3, then again we will reach at this step. Okay, like we will add 0 here, then 7 into 4 is 28, then again we will get 2. Okay, so we can say that this block of remainders repeats itself. So that's why here the block of digits in the question, this 1 4 2 8 5 7, will repeat after this 7. ओके, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ब्लॉक्स ऑफ नंबर दिखते हैं जो कि रिपीट होते हुए नज़र आते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर्स तो अलग अलग है हर स्टेप में, बट कुछ रिमाइंडर्स बाद हमें क्या मिलेगा, ये रिमाइंडर्स रिपीट होते हुए दिखेंगे. लाइक आफ्टर 1 हमें 3 मिला, देन आफ्टर 3 डेफिनेटली वी विल रीच इन दिस पॉइंट. ओके, जब हम इसमें 0 डालेंगे और फिर हमें 7 into 4 दैट इज़ 28 मिलेगा, देन अगेन वी विल गेट r इक्वल टू 2. देन वी विल नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, r इक्वल टू 6. तो हमें मिला कि हाँ, रिमाइंडर्स अलग हैं हर पॉइंट में, बट कुछ रिमाइंडर्स बाद वो फिर से रिपीट होना चालू हो रहे हैं. ओके, दैट्स वाई यहाँ पे सेम नंबर ना रिपीट होके कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होंगे जो कि रिपीट होंगे. ओके, नाउ वी कैन राइट 1/7 इक्वल टू 0.142857 and again 142857. So here we can see that these block of digits repeat after 7. Okay, so we can put a bar over these block of digits, where bar indicates the block of digits that repeats. Okay, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये block of digits फिर से repeat हो रहा है, मतलब 7 के बाद फिर से ये block of digits क्या हो रहे हैं, repeat हो रहे हैं. That's why हम इसके ऊपर एक bar put कर देते हैं. क्यों? क्योंकि ये बार इंडिकेट करता है कि हाँ, ये ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, बार बार अब रिपीट होंगे. अगर हम कंटिन्यू करें डिवीजन तो यही नंबर्स वापस से रिपीट होंगे आफ्टर 7. सो ऑन सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल वी हैव ऑब्जर्व 3 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज द रिमाइंडर्स ईदर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स. ओके, या तो रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, लाइक इन सेकेंड केस दैट इज इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 7/8 हमने क्या देखा कि रिमाइंडर कुछ टाइम बाद क्या हो गया, 0 हो गया. और द सेकेंड थिंग इज लाइक कि रिमाइंडर जो है वो या तो रिपीट हो रहा है, लाइक यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, या कुछ सेट्स ऑफ रिमाइंडर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. लाइक यहाँ 3 2 6 4 ये कुछ टाइम बाद क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर. ओके, like here see 1, what we get, remainder 1, so here 1 is less than 3. Okay, so the number of entries repeating in the string of remainders is less than the divisor. Here divisor is 3 and remainder, yes, the remainder is less than 3. Come in this question, that is 1/7. Here the remainders are 3 2 6 4, all are less than the divisor, that is 7. सब क्या है, 7 से लेस है. ओके, ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन. ओके, तो हियर ऑल्सो द रिमाइंडर रिपीट्स, रिमाइंडर यहाँ रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग digit that is repeating in the quotient also. Okay, here also remainders repeats after some time. Okay, again 3 से start हो गया remainder, तो that means remainder is repeating. Okay, that's why we get a block of digits that repeats in the quotient. Okay, so these were the 3 points that we have observed. So at last we are getting 2 types of cases. Case 1 where remainders become 0. पहला केस जिसमें रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है. एंड सेकेंड केस व्हेन रिमाइंडर्स नेवर बिकम 0. ओके, लाइक जैसे 10/3 में रिमाइंडर 0 नहीं हुआ. सिमिलरली 1/7 में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है. एंड 7/8 बिलोंग्स टू केस नंबर 1 जिसमें
रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है. So let's see the case number 1, that is when the remainders become 0. So here the example of for case number 1 is this 7/8. Okay, here we can say that after some time we get remainder as 0, and here in the question we get 0.875, and after 5 we are not getting any digit. So here we can say that the decimal expansion terminates or end after a finite number of steps. That means कुछ steps बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल एक्सपांशन, मतलब एंड हो रहा है, यहाँ पे और डिजिट्स नहीं आ रहे. सो वी कॉल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग. तो ऐसे नंबर्स दैट इज 7/8 को का डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग. दैट मीन्स दैट एंड्स, ये ख़त्म हो रहे हैं, ये एक पॉइंट पर आकर क्या हो रहा है, मतलब उसके आगे कोई डिजिट्स नहीं हो रहे. दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग. सो लेट्स सी द केस नंबर 2 वेयर द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. सो हियर 1/7 and 10/3 are such example that comes under this type of case. So while solving this 10/3 and 1/7, we notice that the remainder repeats after a certain stage, okay, forcing the decimal expansion to go on forever. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है रिमाइंडर्स, है ना, जिसकी वजह से हमको डेसिमल नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट होते जा रहे हैं 3333, यहाँ पे 142857 रिपीट हो रहा है. ओके, तो हमें नेवर एंडिंग बट रिपीटिंग एक्सपांशन मिल रहा है. सो दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वेयर रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग. मतलब ये नेवर एंडिंग और रिपीटिंग एक्सपांशन हमें इन केसेस में क्या मिलेगा. ओके, so this type of decimal expansion is known as non-terminating, repeating or recurring. Okay, so we see that the decimal expansion of rational numbers have only two choices. हमने यहाँ पे rational number लिए हैं कुछ, 10/3 is a rational number, 7/8 is a rational number, 1/7 is a rational number. So we get two types of choices here that are either terminating or non-terminating recurring, that in decimal expansion. Let's see the decimal expansion of √2, where √2 is a irrational number. So here I am doing decimal expansion of √2 by using long division method. So after performing long division method, what we get the decimal expansion of √2 equal to 1.4142135 and so on. Here we are getting decimal expansion non-repeating and non-terminating. यहाँ पर ये decimal expansion 5 के बाद end नहीं हो रहा है. If we continue the process of long division, ये और भी आगे digits हमको मिलेंगे. Okay, decimal expansion में. Okay, तो और इधर यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं हो रहा. लाइक 4 के बाद क्या आया, 1, देन अगेन 4, देन 4 के बाद क्या आ रहा है, 2. अगर 1 आता तो हम बोलते कि हाँ रिपीटेशन तो हो रहा है, बट हियर व्हाट वी आर सीइंग दैट 2 कम्स हियर. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. मतलब जो टर्मिनेट भी ना हो और उसमें डिजिट्स का रिपीटेशन भी ना हो, या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन भी ना हो. ओके, तो these type of decimal expansion is known as non-terminating, non-repeating or non-terminating, non-recurring. So decimal expansion or representation can be classified into two parts, that is terminating and non-terminating. Terminating refers when remainders becomes 0, whereas non-terminating means remainder never becomes 0. Okay, further non-terminating can be divided into two parts, that is repeating and non-repeating. Okay, we have seen the cases for non-terminating and repeating, that is 10/3 and 1/7, and we have also seen the case for non-repeating one, that is √2 is an example
that comes under non-terminating and non-repeating. And we have also seen the case of terminating decimal expansion, that is 7 by 8. 7 by 8 was the example for terminating decimal expansion. So here we can notice a thing, that all rational numbers can have two choices, that is terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion, and irrational expansion is always non-terminating non-repeating. So here we can say that the decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल. मतलब अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, देन वी कैन से दैट दैट नंबर इज रैशनल. और अगर हमको फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम देखेंगे ईदर वो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डेसिमल एक्सपेंशन of irrational number is non-terminating non-recurring. मतलब डेसिमल irrational नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा. मोर ओवर, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल. तो अगर किसी भी नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलता है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, इरेशनल. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर. अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन. ओके, तो वो नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स. ओके, एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. हम इरेशनल नंबर्स को p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते. इसका प्रूफ हम क्लास 10th में देखेंगे. वी विल स्टडी द प्रूफ फॉर दिस स्टेटमेंट इन क्लास 10th. ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ irrational number. We have already seen the decimal expansion of root 2. We have observed that it is non-terminating non-repeating, so root 2 is a irrational number. Okay, pi is another irrational number whose decimal expansion is also non-terminating non-repeating. Okay, so there comes a question कि why we take 22 by 7 equal to pi, या why we take pi equal to 22 by 7 while solving a question. Because 22 by 7 is gives an approximate value for pi. Okay, but pi is not equal to 22 by 7. 22 by 7 is actually a rational number, where pi is a irrational number. The decimal expansion of 22 by 7 is non-terminating repeating, whereas the decimal expansion of pi is non-terminating non-repeating. Okay, but it gives the approximate value, that's why we take 22 by 7 in the solution of some questions. Okay, but it is not equal to pi. Here is the question number 1 from exercise 1.3 of NCERT. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. मतलब जो भी हमको फ्रैक्शन दिया उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इट हैज़, और इससे हमें कौन सा डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है, लाइक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, देन हियर्स द सॉल्यूशन. हमें क्या करना है, सिंपली 2 को 11 से डिवाइड करना है. वी हैव टू डिवाइड 2 by 11. So we get a quotient of 0.1818. Okay, if we divide 2 by 11, then here we can say that 11 into 0 is 0. Then we get 2 as a remainder. Then we put a decimal here and a 0 here. So 11 into 1 is 11. Then we get remainder as 9. Okay, then we again put a 0 here, and what
11 into 8 is 88. Then again we are getting remainder 2. Then in next step we are getting remainder 9. So obviously if remainders repeats, then we get a repeating block of digits in the quotient. Okay, therefore 2 by 11 can be written as 0.1818 or 2 by 11 equal to 0.18 bar. So it is a non-terminating and recurring decimal expansion. Now you can try other questions from exercise 1.3. Along with NCERT, you can try these questions also. Here it is asked to express the rational numbers as decimals. That means we have to perform the decimal expansion of the given rational numbers. हमें इनका decimal expansion find out करना है. Okay. So these number are 4 by 9 minus 4 by 9. The second number is 327 by 500 and third number is 439 by 999. You can try this. Here is the solution for the question that was asked in previous video, that is number system part 1. Okay, so the question says find the three rational number between -2 and 5. हमको 3 rational numbers निकालने हैं किन के बीच में, -2 and 5 के बीच में. तो हम क्या करेंगे, to find the three rational number we will divide the given numbers by 4 or the number greater than 3 or the number greater than 3. like हम यहाँ 4 और 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम 5 से भी कर सकते हैं या 6 से भी कर सकते हैं. Okay, so when -2 is multiplied and divided by 4, we get -8 by 4, and 5 is divided by multiplied and divided by 4, we get 20 by 4. So the rational numbers between -8 by 4 and 20 by 4 are -7 by 4, -6 by 4, -5 by 4 up to 19 by 4. Okay, so we have to only find 3 rational numbers. Okay, हमको सिर्फ 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम इनमें से कोई से भी 3 चूज़ कर सकते हैं. ओके, लाइक हियर आई हैव टेकन -7 by 4, 11 by 4, 18 by 8. आप इनमें से कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 by 11 एंड 8 by 11. हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं -3 by 11 एंड 8 by 11 के बीच में. So first of all we write the rational numbers between -3 by 11 and 8 by 11 in the form of -2 by 11, -1 by 11, 0, 1 by 11, 2 by 11. So these are the rational number between -3 by 11 and 8 by 11. Okay, but if we count here, like here is the first, here is the second, third rational number, fourth, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. So we are directly getting the 10 rational numbers between -3 by 11 and 8 by 11. So the answer will be 10 rational numbers between -3 by 11 and 8 by 11 are -2 by 11, -1 by 11, 0 and up to 7 by 11. Here we are directly getting the 10 rational numbers between -3 by 11 and 8 by 11. Here we do not have to multiply or divide it by the number greater than the number asked in the question. Okay, हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लिखें -3 rational numbers between -3 by 11 and 8 by 11 in the form like -2 by 11, -1 by 11, 0 and up to 7 by 11, तो हमें डायरेक्टली 10 rational numbers मिल जा रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ और मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. Let's see question number 3. Find 5 rational number between 3 by 5 and 2 by 3. हमें 5 rational numbers find out करना है 3 by 5 और 2 by 3 के बीच में. Here we can see a point that in previous question we have given with some fraction which have equal denominator, but here denominators are different. Okay, so first of all we have to make them equal. Okay, so for that we will take the LCM of 5 and 3, and the LCM of 5 and 3 is 15. यहाँ डिनोमिनेटर्स अलग हैं और जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे उसमें डिनोमिनेटर्स सेम थे. ओके, सो हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है, तो हम क्या लेंगे 5 और 3 का
LCM लेंगे जो कि होता है 15. Now to make denominator equal to 15, we will multiply and divide 3 by 5 by 3. Okay, so we get 9 by 15. तो हमको 3 by 5 का डिनोमिनेटर 15 बनाना है. उसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिससे हम 9 by 15 मिलेगा. Okay, similarly here to make denominator 15, we will multiply and divide by 5. So we get 10 by 15. इधर भी सिमिलरली हमें 15 लाना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 10 by 15. Now we can get the 5 rational numbers between 9 by 15 and 10 by 15. So how, like here it is asked to find 5 rational numbers, so we will multiply and divide it by 6. We get 54 by 90. Similarly here we will divide and multiply it by 6. We get 60 by 90. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स निकालने बोला है तो हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ईच नंबर को. ओके, तो हमें 54 by 90 मिलेगा और सेकेंड नंबर को करेंगे तो 60 by 90 मिलेगा. सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स विल बी 55 by 90, 56 by 90, 57 by 90, 58 by 90 and 59 by 90. Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe to Nick Teach.